Hi guys, how do we deal with workplace toxicity, especially in our healthcare field as healthcare professionals? Very toxic environment. People are leaving their courses, deciding to end their lives. But how do you deal with this toxicity? कोई बताता नहीं है. So आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा. So please hear me out. थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, but it is going to help you or help someone that you can share this with on how to identify what kind of toxicity needs to be dealt with, how to deal with that toxicity in the proper channel, how can I as an individual help you deal with this toxicity, and how you can decide how to cope with this, because this is a very important part. क्योंकि भले ही कैरियर हो या डिग्री हो, जो कुछ भी है, it cannot be at the cost of your mental health, can be not be at the cost of your interests and your life. Your life is very very precious. You should do what you like and what you're passionate about. You should see patients and you should be you should be fit enough to help others. You should not end up being a patient yourself and be in a helpless situation. ठीक है? So hear me out guys. Now first of all, पहले हमको डिफाइन करना है कि व्हाट टॉक्सिसिटी इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल. और आप इस बात पे बोल रहे हो यार ये क्या बात कर रहा है, नो अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी शुड बी एक्सेप्टेबल इन लाइफ. एंड आइडियली ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन मेडिकल फील्ड, क्लिनिकल मेडिसिन इज अ फील्ड जहाँ पर टॉक्सिसिटी के कुछ इनहेरेंट reasons होते हैं. There is also a pharmacology chapter on toxicity, and every drug that you take can have a toxicity. Anything in life which you overdo can have toxicity. So toxicity is an outcome, and then there is a place where थोड़ा सा एक threshold होता है जहाँ पर एक चीज़ acceptable होती है, and उसके beyond it is unacceptable and extremely damaging. So we need to know what is the acceptable toxicities in medical healthcare. See, as a healthcare professional, you're in a field where you're dealing with life and death. यहाँ पर लोग खुशी खुशी नहीं आते हो, भाई डॉक्टर लोग कैसे हो, नर्स लोग आराम क्या, ऐसे नहीं आते हैं. बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में आते हैं मैनी टाइम्स, या कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं. एंड यू हैव नो कंट्रोल ऑन द वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स, यू हैव नो कंट्रोल ऑन देयर क्रिटिकलिटी, देयर सीरियसनेस, the resources that are there at that point of time, your available help to you, how tired you are before that, whether you've eaten or not. ये सब देख के नहीं आते हैं पेशेंट्स और ये situations. Okay, so there is an inherent toxicity on where you may work beyond hours of your ability, you may work beyond, go out of the way to do certain things to help your patients. And that's what this job is cut out to be. It's like firefighting, or being a soldier, or being somewhere where you are dealing with somebody's bad time, and when somebody's bad time is happening and you are trying to save them from that, it is not always going to be very comfortable and rosy. This is something we all sign up to do, especially in most clinical fields. Even in the field of medicine, there are many fields where you don't have to do like this. There are non-clinical, paraclinical fields, teaching fields, जहाँ पर आप एक 9 to 5 टाइप का जॉब रख सकते हैं, और या 9 to 5 टाइप, या अपना एक प्राइवेट करियर रख सकते हैं जहाँ पर आप अपने टाइमिंग्स डिफाइन कर सकते हो. There are many ways to deal with it, even within healthcare, but some fields you cannot. Emergency medicine, ICUs, सर्जिकल फील्ड, सर्जरी प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो क्या आप मतलब कैरोटिड आर्टरी कट हो गया, 4 बज गए, SBI की तरह निकल जाओगे क्या? CPR दे रहे हो, अरे यार मेरा टाइम हो गया, टॉक्सिक हो रहा है, चले जाओ. नहीं हो सकता यार, यू कांट डू दैट. somebody's life is at stake, and we are in this field to save lives, to improve life and health of patients. तो ये toxicity रहेगी. अब क्या होता है, the problematic toxicity usually comes from people as usual are the problem. And whether it's your juniors or your peers or your superiors, we all work as a team. And somewhere all of us being in healthcare professionals, हमारा इंटरेस्ट यही है कि यार हम आए इसी में ताकि पेशेंट्स इंप्रूव हों, राइट, पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो. बट वी मे हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स. Either we don't have the right resources, we are not paid the right amount, we are overworked, we are under recognized, we are pulled down. All of these things के बावजूद भी हम लोग ट्राई करते हैं, और उस समय अगर कोई भी टीम मेंबर अपना काम ढंग से नहीं करता है, या ढंग से अपने टीम को रिस्पेक्ट नहीं करता है, या पेशेंट के आउटकम को रिस्पेक्ट नहीं करता है, पीपल लूज देयर कूल. The people at the end of the day, I'm not justifying it, but it is something that happens. Okay, people lose their cool, and especially the medical field is designed to be hierarchy based, and the reason why it is hierarchy based is because you need experience to treat patients. Okay, and sometimes you cannot. Experience is time based. आप
आप अपना ग्रेजुएशन करते ही एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते हो। तो आप एक्सपीरियंस कैसे गेन करते हो? किसी सुपीरियर के साथ काम करके। सुपीरियर इसलिए इज सुपीरियर इन एक्सपीरियंस, ही और शी हैज़ वर्क 15, 20, 30 ईयर्स, बहुत डेकेड से पेशेंट्स उन्होंने मैनेज किए हुए हैं, और उसके बीच में भी बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम कर चुके हैं। इनके पास इतनी प्रैक्टिकल लर्निंग्स हैं वेयर दे कैन इंश्योर कि आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, बिकॉज आप बस अभी आए हो और आप बहुत सारी चीज़ों को ओ ऐसा भी होता है, इस चक्कर में पेशेंट की जान नहीं जानी चाहिए। सो हायरार्की बेस्ड डिज़ाइन ज़रूरी है। और ये जो लोग थोड़े सीनियर होते हैं, इनकी जो स्किल्स होती हैं ये बदलती रहती हैं, राइट? व्हेन यू स्टार्ट ऑफ यू डू एवरीथिंग हैंड्स ऑन, एंड एज यू गेट मोर एंड मोर अप द लैडर यू हैव पीपल अंडर यू, सो यू डू मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक डेलीगेशन एंड प्लानिंग एंड गिविंग टारगेट्स। मतलब ये पेशेंट को ऐसे करो, इतने वो देखो, वो वाला टारगेट नहीं, मार्केटिंग वाला टारगेट। मतलब टारगेट इज अ टारगेट, राइट? एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट हैज टू इम्प्रूव, दैट्स ऑल्सो अ टारगेट, राइट? सो एंड समटाइम्स अगर टीम ढंग से काम नहीं करती है तो द मैनेजमेंट और द सीनियर लीडरशिप ऑफ दैट टीम इज गोइंग टू गेट अपसेट, एंड इफ दे गेट अपसेट इन अ वे दैट इट इज रिलेटेड टू ओनली द वर्क, पेशेंट केयर के रिलेटेड, किसी ने बोल दिया कि यू हैव नो आइडिया हाउ मच दिस इज गोइंग टू डैमेज द पेशेंट्स लाइफ, अभी ये कॉम्प्लिकेशन हो गया है, अभी हमको ये मैनेज करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना चाहिए था, मुझे पहले बता देना चाहिए था, यू शुड हैव डन इट लाइक दिस, यू शुड डू योर वर्क प्रॉपर्ली. All of these things are expected and a part of this. Ideally this should be done in closed doors in an office in a very ideal setting, but ऐसा यार theoretically अच्छा लगता है, but आप भी सोचो when you lose your cool, you look at the environment around you, you are just dealing with it yourself because you are a part of that team and the outcome is also reflecting on you. So whether this happens in all other fields where emergencies are dealt with, and this is where it goes into that gray zone कि ये toxic है या नहीं है. But ये वाला जो gray zone है ये situational होता है, and situation के बाद it should not impact your relationship. Okay, if it is just limited to work and not impacting your work relationship, it is fine. And this happened to me many times and to many doctors. Sometimes our senior professor or somebody we goofed up in some surgery or somewhere, and they show us our place by teaching us, sometimes shouting, sometimes doing this, but after that yaar coffee peete hain, they have lunch together, and they're nice, and they say yaar see I was not in the right frame of mind that time, but aisa nahi hona chahiye yaar, they could have lost that person because of this. You should be careful, and that way you also remember it. Okay, but when is toxicity unacceptable? Now this is an important part which I'm going to tell you. If your juniors, your peers or your superiors or anyone in your workplace is making any personal remarks on you, whether it is your gender, whether it is your ability, whether it is your mental capability, calling you dumb, calling you incapable, making remarks on your family, making remarks on your origin or your race, these are unacceptable toxic work environment behaviors, and we have to follow a particular process जो मैं बताऊंगा. एक प्रॉपर चैनल भी बताऊंगा और एक बाईपास चैनल भी बताऊंगा जहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं. सो हियर मी आउट. ऑलराइट, बट एनीवन पुलिंग यू डाउन even after the activity is done, holding a personal grudge and pulling you down at every instance possible, disgracing you, publicly embarrassing you, trying to attack you emotionally, trying to break you down, making your every minute in the work environment regretful, trying to give threats, trying to say तुम्हारा करियर ख़त्म कर देंगे, तुम्हें पास नहीं होने देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर, मतलब you will not be able to work as a doctor. ये सब तरह की चीज़ें, this is not a gray zone, this is a clear red zone, and this should not occur in any work environment, and you have to do something which will get you out of this situation. There is no fear का रोल इधर कि अरे ये सच में थ्रेट हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं थोड़ा सा सफ़र कर लेता हूँ फिर बाद में मैनेज कर लेंगे. दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन गाइस. यू डोंट हैव एनी करियर और फ्यूचर if you are going to allow this to continue. And what is the first thing that you should do? And the first thing is communicate. Okay, and communicate in a recordable and a reproducible way, either by a written letter with a copy to you, and or with an email or a message where you have that documented saying
addressing your junior, your colleague or your senior in whatever way you address them, saying that ये जो situation हुआ था, I understand this was not an ideal situation, but जो मेरे साथ हो रहा है ये acceptable नहीं है मेरे लिए. I am not able to cope up with this. This is pulling me down, and this is at the end of the day impacting my work and ability to treat patients. And I would like something to be done about this. And I'm open to solutions and I'm open to also change, but this cannot go on in this particular manner. ये communication करना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद भी अगर चीज़ें वर्सन होती हैं या कोई स्टेप नहीं लिया जाता, then you have to identify the superior of that individual who is in question and write to him or her saying that, look, I did approach, I did try to mend things on my own, but it is not working out. Things are getting worse. Now I'm very scared of my life. I am scared of my work. I don't want to come anymore. And exit के लिए bond लगा रखा है. इतने सारे ये situations hospital ने लगा रखे कि मैं exit भी नहीं कर सकता. So what can we do over here? And if the superior also does not take any action and you have documented it, you have some proof of the mishappenings happened to you, then you have to go to the cops, you have to approach the police. There are a lot of legal acts and rules of workplace harassment. There are the POSH Act, and there are a lot of there could be sexual harassments and abuses, and even mental trauma is considered as a form of hurt and grievous injury. There are a lot of mental health acts that are coming there that cause all kinds of problems that you can claim as damage to you and your health, and you file an FIR against the institution or the people who are involved, and that is the legal and the proper route. Now if you are scared to do that, you think you're alone, there are people like me and many other doctors out there who are active on social media, who are active on Twitter. अगर आप हमें लिखते हैं कि देखो ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जगदीश मेरे साथ, and this is whatever I have evidence to support, because see I also work with a team, and many others also have their own teams, and we just can't take something blindly and escalate it. But yes, of course, if you can show that this is a genuine problem that you are facing, we are more than happy to put that out to authorities who can take action, and look into it, or also at least bring this into the knowledge of the public domain, that this is happening with you at this particular institution and in this particular college, so that there is a social vigilance that happens. We can't take laws into our hand. We cannot abuse someone in return. Yes, we can escalate this into the public domain, saying that look at this situation that this person is facing and this is not right, and bring it out there. And many times when you've seen this on social media, the people themselves are then having this pressure to stop doing this, or some superior authorities will have a pressure to take corrective action. The police may have pressure to take corrective action, and that is something we can do for you as a colleague in this particular healthcare community. Even outside healthcare community, I am personally always there to help you with whatever I have in my social media reach to at least some people higher up take me seriously, to at least bring it to their notice कि ये ऐसा problem हो रहा है and we can help you with it. So don't hesitate to reach out to me or anybody else. There are many doctors out there. I can list at least 20 of them who are so actively helping the healthcare community. They're part of IMAs, and they're able to bring these things up to the right authorities and make sure that action is taken. So you are not alone. पहले ऐसे नहीं होता था. पहले किसी के they were helpless. 15-20 years ago, 25 years ago, when I was in medical college, or as a student or as a postgraduate, could not we did not know who else is there who can help us. We used to suffer alone, but now you are connected with the social network, with a group of doctors who are activists also, and can help you. So don't hesitate to do that. Okay. And lastly, before I close, this is a message given to me by one of the doctors, senior doctors, whose character was Venkat Ramappa in Starting Troubles web series. मेरे साथ भी toxicity हुई है, मेरे web series में दिखाया गया है. And I am very good friends with the real life Venkat Ramappa today, and this doctor जिनके ऊपर ये character बना हुआ है, told me once why he had to be toxic with me for whatever reason, his personality or his issues that he had, and he told me the solution. See, sometimes
there is a solution for everything, and sometimes the solution comes from the source. And this senior doctor told me a very important thing which I use till today in my life, and it is a great way to prevent toxic environment. In that is transparent communication. You are a part of a team, and he told me, Jagdish, when you do not communicate that this task cannot be done, it causes a lot of problems to the patients and a lot of problem to the team and a lot of problems to us, right? Because we are all responsible. And sometimes, and that time I really understood that toxicity is not only superior to junior. You not doing your work, you not communicating properly, you putting the other team in a situation, you putting your patients into a situation, you putting the hospital into a situation, is also a form of workplace toxicity that you may be doing. You're not entitled just because you're an intern or of just pass out or a junior, that you cannot care about the work given to you and you can delay it at your whims and fancies, or you can just be very regardless about it and focus on other things. ऐसा आप नहीं कर सकते हो. You are in this field, you are a part of the team, and whatever task is given, see, as you pass out, obviously you cannot independently see patients and operate, right? You have to learn a lot of things or do a lot of things maybe for 3 to 6 months, which are not directly clinical, because you've just been given that time to get adjusted and understand how the workflow works. हम सब ने यूरिनरी कैथेटर डाल के ही फिर बाद में सर्जरीज की हैं, राइट? सो हमको भी फीडिंग ट्यूब डालना आता है, हमने भी रिपोर्ट्स लिखे हैं, हमने भी रिपोर्ट्स कलेक्ट किए हैं, हमने भी केस शीट्स भरी हुई हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज ओनली टाइम यू कैन टेल व्हेन यू हैव जूनियर्स अंडर यू दैट काम कैसे करना चाहिए. यू कैन just directly be upgraded to the head of department, and you cannot take your work given to you for granted. And the one thing that this doctor told is, Jagdish, communicate. अगर जिस टाइम तुमको पता चलता है कि ये काम नहीं हो सकता है, बस मुझे बता दो. तुम्हारा मन नहीं है करने को भी तो भी बता दो. बोलो कि डॉक्टर, आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस, डोंट गिव इट टू मी. बता दो. I will not be upset with you, or even if I'm upset, I will at least respect you that you have told me and you have avoided a problem with the patient, because I am trusting you with this work and you are telling me you can't trust me with this work. तो मैं किसी और को कर दे दूंगा ये काम, या मैं अपने आप कर लूँगा, या मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लूँगा. But it is not acceptable that the patient suffers because of you, and that is why I get angry, and that is the reason that he tried to justify it. Now whether justifiable or not, ये पॉइंट तो मुझे ठीक लगा कि यार कम्युनिकेट करना चाहिए, और मैं इसको अपने एज अ प्रिंसिपल लाइफ में यूज़ करता हूँ, वेदर इट्स विथ माई किड्स और फैमिली और वर्क और प्रोफेशनल लाइफ. आई डू वन थिंग दैट द मोमेंट आई रियलाइज, यार ये जो काम मैंने लिया हुआ है ये नहीं हो सकता है, इसमें कुछ चेंज होने वाला है, टाइमलाइन बदलने वाला है, या मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बता देता हूँ. एंड गाइज, यू मे थिंक, people will think that this is an arrogant thing to do, this is going to put me into more trouble. Actually, it is not. It is what a team member should do. A team member should communicate, team member should be transparent and should tell. Sometimes help is provided, sometimes the task is given, or sometimes at least conversations happen कि अच्छा ये नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है, तेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है. मैं बोलता हूँ सर मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो ठीक है तेरे को ऐसा काम देंगे फिर हम लोग, ठीक है. सो एटलीस्ट सम कम्युनिकेशन हैपन्स, एंड देन यू ऑल्सो फील लाइक या ओके माई टीम इज अंडरस्टैंडिंग मी, एंड देन स्लोली देर इज लिटिल बिट परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड कैलिब्रेशन टाइम होता है, जिसमें फिर आप फिर जेल हो जाते हो टीम में, एंड देन यू बिकम टुगेदर. And there is no one who, even though there was personal grudges and people were toxic with me, but there is no one today who's not my friend or is not someone I can call and take guidance from. And that is how the medical community is. But again, it should not be to the level that it breaks you down, burns you out, becomes personal, and it becomes so toxic that you decide to either leave the field or end your life. अगर आप बोलते हो कि सर आपके लिए बोलना आसान है, बट हमारे कॉलेज ने 5-5 करोड़ का बॉन्ड लगा रखा है, ऐसा कुछ, there are legal ways out of this. Nobody can just directly put a bond. आपने साइन भी कर दिया हो तो वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि sometimes that itself, if it is a reason to stress you out, reason to burn you out, reason to cause mental health and damage, then they are also responsible for it and liable for it for legal action. Okay, you just have to believe in yourself, have the courage, and take this in your hands. And last thing मैं बता रहा हूँ यार, all of this toxic behavior usually happens in environments where there is job oriented field, employer employee, यार कोई खुश नहीं है उसमें.
HOD से लेके जूनियर तक कोई खुश नहीं है. दे आर ऑल अंडर पेड, दे आर ऑल ओवर वर्क, दे आर ऑल अंडर रिकग्नाइज, एंड दैट्स हाउ मेनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस वर्क. नहीं तो उनको मार्जिन प्रॉफिट कैसे बनेगा? अगर सबको मुंह बोला देंगे तो वो पैसे कैसे बनाएंगे यार? इट्स अ बिजनेस एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बट इट डज हैपन. Hospitals think about how they run, organizations think about how they run, and they will run by cutting as much from you, the resources, and they will make sure that you overwork and you are underpaid and under recognized many times, just because the operations have to run, because the organizations also goes through their ups and downs. एंड जब उनको पता है कि यार ये लोग इतने डेस्परेट हैं जॉब के लिए, हमको जो इतने सारे मेडिकोस जूनियर जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, पीजी ले लो, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, उनको पता है इतना डिमांड है, तो ये लोग घिस घिस के कम कम पैसे से भी काम कर लेंगे. आप इतना भाव देते हो, बट हु स्टॉपिंग यू फ्रॉम सेटिंग अप योर ओन क्लिनिक, वर्किंग विथ योर फ्रेंड्स, मेकिंग अ नर्सिंग होम वर्क, और वर्क एज अ कंसल्टेंट डॉक्टर इन अ नर्सिंग होम? हु स्टॉपिंग यू? सर इतना आसान नहीं है सर, बहुत पैसा लगता है. कोई पैसा नहीं लगता यार. थिंग्स हैव चेंज नाउ डेज. बहुत टाइम पहले 15-20 ईयर्स अगो वी यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस टू सी पेशेंट्स. अभी ऐसा नहीं है. वी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कदमों पे है यार. हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. हमारा MBBS डॉक्टर पेशेंट देखता है, एंडोस्कोपी करता है, कोई उससे पूछता नहीं तुम्हारी डिग्री क्या है. सिर्फ तुम लोग ही, तुम्हारे पीयर्स नहीं बना रखा है जस्ट MBBS. कोई भी पेशेंट या रिलेटिव जस्ट MBBS नहीं पूछता, और अगर जो भी कुछ पूछते हैं दे डोंट अफेक्ट योर प्रैक्टिस और योर करियर. ठीक है, वॉट मैटर्स इज ओनली वन थिंग, दैट यू आर गुड एट सीइंग पेशेंट्स एंड पेशेंट्स आर हैविंग द राइट आउटकम एंड रिजल्ट्स. वो वर्ड ऑफ माउथ में तुम्हारा बोलेंगे कि इस डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से देखा, मेरी प्रॉब्लम को समझा, तू भी इस डॉक्टर के पास जा. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज जो लोग डॉक्टर नहीं है उनकी रॉम्पिंग प्रैक्टिस चल रही है, वो लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं. उनसे कोई क्यों नहीं पूछता? उनके पास तो MBBS भी नहीं है, उनके पास तो कोई ग्रेजुएशन डिग्री भी नहीं है. कौन बोल रहा है ये? तुम्हारे पीयर्स बोल रहे हैं जस्ट MBBS कि तुम्हारे PG के बिना लाइफ कुछ नहीं है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पैसा मिलता है ये डर फैलाने का कि तुमको PG करना है. इसमें बहुत लोगों के धंधे लगे हुए हैं और आप उसमें बकरे बन रहे हो. सो यू गाइज हैव टू नो एंड रिकग्नाइज दैट यू आर बीइंग प्लेड टुडे इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years. You do not need any of this like it was. Okay, 20 साल पहले की चीज़ अगर तुम आज अप्लाई करोगे और 10 साल बाद तुम डॉक्टर बनोगे, तो गाइज कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इशू है आपको लाइफ को समझने में, राइट? सो nobody is going to tell you this, and maybe this may not reach many people, but I know even if one person listens to this and says यार I don't need to face this, मैं अपने आप करेगा, ये वीडियो और मेरा ये टाइम का पर्पस खत्म. ठीक है, बिकॉज समबडी नीड्स टू टेल यू द आउट रियलिटी आउट देयर. मैं 7 क्लिनिक चलाता हूँ, कुछ क्लिनिक्स में तो मैं अपने नाम के नीचे डिग्री भी नहीं डालता. कोई नहीं पूछता यार, कोई नहीं पूछता. आप अच्छी तरह से पेशेंट से बात करो, आप उनको दिखाओ उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप उनको अच्छी तरह से काउंसिल करो और उनको ठीक करो. That is what matters as any healthcare professional, and patients will come back to you and they will send other patients to you. That's what they need. They need the trust. Your degree और कहाँ से तुम पास आउट हुआ सर ट्रस्ट नहीं आता है, उससे शायद घमंड आता है, राइट? बट शुरू में आपको उसमें से पेशेंट्स आ जाएंगे, बट अगर आप नहीं देख सकते ढंग से तो कोई फायदा नहीं है आपका. आप बोलोगे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस खराब है, फिर यू बेटर फाइंड अ जॉब, बिकॉज और कोई आपको पैसा नहीं देगा आपके इस तरह के काम से, राइट? सो यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड, यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट और ग्रेट. नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे PG के लिए है. बट एज अ लाइफ इन लाइफ एज अ डॉक्टर यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट. यू जस्ट नीड टू बी गुड इनफ, एंड गुड इनफ मीन्स यू डोंट डू एनी हार्म एंड यू ट्रीट द पेशेंट्स करेक्टली. एंड व्हेन यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट्स यू टेल द पेशेंट बॉस ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये मेरे आपके बाहर है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इसको बेटर देख सकते हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाइए, मुझे क्षमा कर दें, मेरी इतनी ही क्षमता है. ये बोलना मैं भी पेशेंट को लगता है यार कम से कम इस डॉक्टर ने चीट नहीं किया, मुझे बता दिया. बस कम्युनिकेशन ढंग से रखो, इलाज ढंग से करो, डोंट डू एनी हार्म, एंड देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट सर्वाइव एज अ डॉक्टर, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड गाइज. यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी डिग्री. After MBBS, of course, you should have a basic graduate degree, but you don't have to be a specialist. You don't have to be in a big institution to make a career. You just have to be a good doctor, and you need to be able to save patients' lives and treat them to survive. And this is the truth. ये कोई बड़ी बात नहीं है. आप लोग बोलोगे यार 10-20 हज़ार मतलब कितना पैसा लगाना पड़ता है. मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ on how to run your clinical practice and be independent, and how I can also help you bridge some of the gaps that you are facing. So I'm going to make more of these videos, so please listen to this and share it. I know this is not a popular thing to do. I am not motivating you to become toxic, because आजकल ऐसे बहुत लोग मोटिवेशन बोल बोल के या करो जिंदगी रोक दो, पढ़ो अपना 100% दो और फिर निकल जाओ. ऐसा मैं नहीं कर सकता. मेरे कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती. मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि
जितना भी 10-15 साल काम किया है, सब सेक्टर्स में काम किया है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिग हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, हर जगह। आई एम जस्ट टेलिंग यू what is out there. All right, so all the best. I'm always there, and you don't have to deal with toxicity. Cope like the way I've told you, and people like me and myself are always there. And if you want to write separately to me also, you can. Here's my email address: jagdish jagdish@h.in, and me or someone from my team will definitely get back to you, and eventually wherever I need to intervene, I will try to make sure that I am there. All right, all the best guys, don't worry, apun hai tumhare saath. Take care, bye bye. Jagdish Chaturvedi.